So, hello guys, welcome to my channel VB's Digital Media. My name is Vikul. आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं how to connect a domain with hosting. In this video, we are going to talk about how to connect a domain with hosting. Yes, suppose आपने अपना डोमेन किसी डोमेन रजिस्टर आज से परचेज किया है like GoDaddy और Namecheap, प्लस आपने होस्टिंग किसी और होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर से परचेज की है like Bluehost, SiteGround, Hostinger, any of the hosting provider. So we are going to connect them both. You will see in this video how to connect them both. So coming on my computer screen, first of all we will learn how to purchase a domain on discount. Okay. So उसके लिए आपको एक नई ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी. नई ईमेल आईडी के थ्रू आप नया अकाउंट बनाएंगे GoDaddy पे. लाइक मैं अभी ये मेरी जीमेल आईडी है नई और मैंने इसके थ्रू अभी अकाउंट बनाना है GoDaddy पे. ऑलवेज रिमेम्बर वो डोमेन वो आपकी जीमेल आईडी पहले GoDaddy पे रजिस्टर नहीं हुई हो. अभी मेरी ये वाली आईडी GoDaddy पे मैंने इसके थ्रू अकाउंट नहीं बनाया है. सो टेकिंग दिस, मेक अ न्यू अकाउंट ऑन GoDaddy, sign in, create a new account, create my account. नई ईमेल के थ्रू आप अपना अकाउंट बनाइए. टेकिंग दिस, ईमेल आईडी तो आपको बनानी आती होगी, अदरवाइज यू कैन रजिस्टर ऑन जीमेल एंड क्रिएट अ न्यू अकाउंट. सो ये मेरी ईमेल आईडी होगी. यूजर नेम इट कैन बी एनीथिंग, मेक इट योर, always use username as your Gmail ID, plus generate your password. Okay, and create my account. So मैंने अपना नया अकाउंट बना लिया है GoDaddy पे. ठीक है. ट्राई टू सर्च फॉर अ न्यू डोमेन. अब हमने अपना नया डोमेन सर्च करना है लाइक एनीथिंग हिमाचल ट्रैवलर्स वन, बिकॉज मैंने हिमाचल ट्रैवलर्स ऑलरेडी लिया हुआ है. सो सर्च फॉर योर डोमेन. And parallelly GoDaddy promo code for domain. Okay, so हिमाचल ट्रैवलर्स वन अवेलेबल है. ये मैं अपनी कार्ट में ऐड करूँगा. .com .in यू कैन सर्च एज वेल. जो भी आपका डोमेन है, ऐड टू कार्ट. यू कैन सी एड्स, दीज आर 4 एड्स. अब हम आते हैं कूपन दुनिया पे या एनी ऑफ द websites. You have to search for your promo code on these websites. Here we will continue to cart. Coupon Dunia, 50% off, up to 50% on .com domains. Show me my coupon. That is, ये नॉर्मली आपका कूपन हर टाइम अवेलेबल रहता है CGC 99R. सो मैं यहाँ से ये कॉपी करूँगा एंड वी विल मूव ऑन टू आर GoDaddy अकाउंट. सो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन पूछेगा. यू हैव टू सिंपली क्लिक नो थैंक्स, क्रिएट एन ईमेल. ये प्रोफेशनल ईमेल हम फ्री में क्रिएट कर सकते हैं. ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे आप अपना बिजनेस ईमेल क्रिएट कर सकते हैं. कंटिन्यू टू कार्ट. अगेन बोथ सर्विसेज वी हैव डिनाइड. हम वो दोनों सर्विसेज GoDaddy से परचेज नहीं कर रहे.
नाउ सी, आप जितने ईयर्स के लिए परचेज करेंगे अपना डोमेन, द मोर इफेक्ट इट विल गो ऑन गूगल, उतना ही जल्दी आपका डोमेन रैंक होगा. सपोज इफ आई हैव टेकन फॉर 1 ईयर, सो उनको पता है मैं 1 ईयर के लिए आया, सो वी आई कैन हैव अ टेम्परेरी बिजनेस ऑन माई साइड. बट इफ आई परचेज फॉर 10 ईयर्स, तो उन्हें पता है मैं बिजनेस में ही बैठने आया हूँ. Okay, so try to purchase it for as many years as you can. I will simply now go for 5 years. Okay, you can see for 5 years it's 3455, 34% off, and promo code it has already been added. Let me apply my promo code which I have copied from another website. You have got a great deal. Let's see if we have a deal or not. No, we don't have any deal. So let's see for 1 year. It's 499, 499. But if I delete the promo code, how much it will be? It is 899. See, for 1 year it is 899 without promo code. But with promo code, it's 499. ऑलवेज रिमेम्बर, ये सिर्फ नए अकाउंट पे ही अप्लाई होगा, ये आपके पुराने अकाउंट पे अप्लाई नहीं होगा जो आपने GoDaddy से GoDaddy पे बनाया हुआ है. ऑलवेज यू हैव टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट फ्रॉम अनदर आईडी टू परचेज अ डोमेन एंड गेट अ डिस्काउंट. चेकआउट of 499. Fulfill your address. Yeah. These are 125. Fill on your information. CPR again. And yeah, if you have a GST, you can cover it from your GST. I don't have a GST right now, or I will not fill it. Media. Okay, so everything we have agree and connected. You always have to take this option so they can connect or give you any info about your domain on WhatsApp. Now save. And ये डिस्काउंट आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स पे ही मिलेगा. अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेज करते हैं, ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा. ओके, सो fill on your information and purchase yours. I have already purchased my domain. Let me show you, which is Google Zone. Sumit. Go to my products. After purchasing your domain, आप अपने डोमेन को यहाँ पे उसकी सेटिंग्स के साथ अपनी वेबसाइट को, अपने नेम सर्वर्स को चेंज कर सकते हैं. सी, आई हैव परचेज्ड already. I have purchased the domain himachaltravels.com. Okay, so every time you purchase a domain, आपको एक नए अकाउंट से परचेज करना है. GoDaddy पे अपना एक नया अकाउंट बनाइए जिस ईमेल आईडी से आपने पहले रजिस्टर ना किया हो. सर्च फॉर योर प्रोमो कोड. ओके, and you can only apply this promo code when you have a credit card. Okay, so always remember you can save 3 to 400 on your first domain. Okay, so go finish setting up yours and purchase your first domain on GoDaddy.
Now coming on how to connect a domain with a hosting. हमें यहाँ क्या करना है, हमें सिंपली अपने डोमेन के नेम सर्वर्स को अपने होस्टिंग के नेम सर्वर्स पे रीडायरेक्ट करना है। हम अभी दो तरीके से सीखे हैं, मतलब एक ही तरीके से सीखेंगे, बट हम अलग अलग होस्टिंग पे सीखेंगे। वन इज शेयर्ड होस्टिंग एंड अनदर वन इज प्रीमियम होस्टिंग। The shared hosting is on Namecheap and the premium hosting in our SiteGround. तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम Namecheap के थ्रू कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, Namecheap होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने GoDaddy के डोमेन को। सो सिंपली क्लिकिंग ऑन हाउ टू फाइंड domain name servers for your shared domain hosting. Simply go to Google and check for the official website. Now this is www.namecheap.com. Find your shared domain name service. It will be like this: dns1.namecheaphosting.com, which I have already submitted in my name service. You can simply again change. You can change from this dns1.namecheaphosting.com, and another is dns2.namecheaphosting.com. Simply you can find the shared hosting name service on Google on the official website of your hosting provider. Okay, now I have updated. If you are using a GoDaddy hosting, you can simply choose this one, this option. But if you are purchasing it from another hosting provider, you have to simply change the name service of your domain and point it to your hosting name service. I have already, मैंने यहाँ पे already अपने जो hosting है उसके name service डाल दिए हैं and I will click save. Now what I will do is I will go to my cPanel. cPanel is control panel of your hosting. Whenever you purchase a hosting, आपको cPanel मिलेगा, that is control panel, जहाँ आपकी वेबसाइट का सारा डाटा स्टोर हो रहा है. Now we will log into our cPanel. Okay, you can see it is 2 times. Simply refresh your dashboard of your GoDaddy account. Now you can see we have added our domain name servers which are pointing to our hosting. ये है हमारा पहला स्टेप जहाँ हमने DNS को चेंज करके अपने होस्टिंग के नेम सर्विस की तरफ पॉइंट किया है. नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल गो टू आवर cPanel and go to our category domains, in which we will click on our subcategory, that is add-on domains. Okay, now put your domain name in this himachaltravelers.com already, and simply click on add domain. It will take minimum of 1 minute to add this domain to your account. Now see, the add-on domain Himachal Travelers has been created. Okay, done. For now it is done. Now come back to your cPanel. And move to category softwares. In the category software, you have to click on subcategory WordPress Manager by Softclers. Now simply click on install now. Choose the installation URL, HTTPS. Choose your domain on which you want to install your WordPress software. In directory, don't fill it, leave it blank. Okay, fill in your site name. Mine is Himachal Travelers, and
fill your description. uh, Best website for tour booking. Okay, make sure to fill in both. Plus, this is your WordPress username and WordPress password. You have to generate you on your own. Otherwise, by default, it is admin and the password is this. I will choose mine, vbase, and I will fill in the password. Make your password a bit lengthy, more than 85, more than 80 to make it strong. Otherwise, your WordPress won't be installed on your website. Make sure to make it above 80. Now coming on to admin email. अभी आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो भी आपने ईमेल बाद में जनरेट करनी हो. आई विल चूज support@. Now this is called your business email. In next lecture we will learn how to set up or create a business email through our hosting, for free. We don't have to pay price for this, like you have seen in the in the like you have seen when I was purchasing domain. GoDaddy was asking me to set up me a professional email for my website, not choosing those and setting up mine for free. After setting up my website, I will tell you in the next lectures. Now click on the theme you want to install and select theme. Now install simply. This may take 3 to 4 minutes. Please do not leave the page until the progress bar reaches 100, or do not refresh your WordPress installation in between. Otherwise, it can cause you a bit uh, problem. Now my WordPress has been installed. You can see WordPress has been successfully installed at www.himachaltravelers.com. Administrative URL. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो, लास्ट वीडियो देखी हो, उसमें you have seen, while logging into our WordPress dashboard, we always have to type wp admin आफ्टर आर URL. सी, अब ये मेरा वर्डप्रेस डैशबोर्ड लॉगिन आ गया है. यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करूँगा. ओके, यू कैन सी, रिमेंबर मी, लॉग इन. यू कैन सी यहाँ पे अभी नॉट सिक्योर लिखा आ रहा है. यहाँ पे वैसे एक लॉग बना आता है इस कॉलम में. अभी हमने अपना SSL सेटअप नहीं किया अपनी वेबसाइट पे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल आल्सो सी हाउ टू सेट अप SSL फॉर फ्री. ओके, now this is my WordPress dashboard. WordPress has been successfully installed on my shared hosting on my URL himachaltravelers.com. You will see this dashboard after typing your URL /wp admin. Okay, now moving on to our premium hosting, that is SiteGround hosting. How to set up your is different. A dashboard for your hosting account is different. Sorry. So I will simply click on new website. हम यहाँ पे न्यू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे. नाउ यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है: न्यू डोमेन, एग्जिस्टिंग डोमेन और टेम्परेरी डोमेन. न्यू डोमेन, इफ़ यू वांट टू परचेज अ न्यू डोमेन, अगर आप एक नया डोमेन परचेज करना चाहते हैं अभी साइट ग्राउंड से, अगर आपने वो नहीं परचेज किया हुआ GoDaddy से, सो यू कैन सिंपली गो फॉर सिलेक्ट डोमेन and you can search for yours. But we have already asked, हमारे पास अपना डोमेन है, so I will select existing domain. Temporary domain is for subdomains. This is not preferable, so I will simply type my Himachal Travelers domain name into our hosting.
Yes, the domain you wish to use is not registered with SiteGround account. You should make sure that you have access to the domain in order to update its DNS setting. Remember, it is also suggesting us to change the update our DNS setting, that is domain name server setting, after your site is created. So continue. Now on this, simply skip and create an empty website. Finish. I will set up my own website. Okay. Creating your site. Please wait. It will take less than 2 minutes to complete the website creation. Okay. You are all set. Go to site tools and another way point your domain. Now यहाँ पे हमारे नेम सर्वर्स आ चुके हैं. ये हमारे प्रीमियम होस्टिंग के नेम सर्वर्स हैं. That is ns1 gsn and this we will update our name servers. हम अपने नेम सर्वर्स को अपडेट करेंगे यहाँ पे. Again change your name servers. Okay, and the second name server is save. Remember to always click on the checkbox. अब आप ये सोच रहे हैं हमारी इस पे भी वेबसाइट बन रही है और साथ के साथ हम इस पे भी वेबसाइट बना रहे हैं. सो हमारा डाटा दोनों होस्टिंग में स्टोर हो रहा है. डोमेन का जो हमने साइट बनाएंगे, अब जैसे ही वेबसाइट अगर हम बनाएं तो इस वेबसाइट का डाटा सारा मेरा नेम चीप होस्टिंग पे है. अगर हम इस पे वेबसाइट बना रहे हैं तो हमारा सारा डाटा साइट ग्राउंड की होस्टिंग पे है. नाउ द थिंग इज, जिस भी होस्टिंग पे हम अपने डोमेन सर्वर्स को रीडायरेक्ट करेंगे वो उस होस्टिंग का हमें डाटा दिखाएगा. सी द नेम सर्वर्स आर अपडेटेड. अब यहाँ पे हमारी वेबसाइट यहाँ पे भी ऐड होगी. सिंपली वी हैव टू क्लिक ऑन वर्डप्रेस इंस्टॉल एंड मैनेज. फॉर single WordPress individual, only select WordPress. If you are creating a e-commerce website, you can click on this. I will choose simply WordPress. My domain name is already in this installation path. I don't recommend any. Okay. Now for your username, VBase, and password again. Email support at the rate, or any you can right now you can fill in any of your emails, like my name is. Okay, and install. It will take around 1 to 2 minutes to install your WordPress on your URL himachaltravelers.com. You can see your request is being proceeded. For now, logging into my Namecheap, I will delete my data of this website from my Namecheap hosting. And you can see site is being created. View site. It will ask to choose the theme. No, it won't. No, simply log into Himachal Travelers WP admin. अब इसके लिए हमने अलग यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था. यूज़र नेम सेम था, पासवर्ड अलग क्रिएट किया था. pbase and login. Welcome to WordPress. Start now.
Now it will ask for your theme, whichever you want to install. Right now you can select any. Plus it is giving you some free plugins for your website. Plugins are like applications to your WordPress, like applications. uh, we use plugins for WordPress softwares. uh, Now complete installing. Please do not close or refresh this page. Our WordPress is installing on our website again, himachaltravelers.com. Please do not refresh this page. Don't get confused. You simply have to change the domain name servers of your domain to the. You simply have to change your domain name servers of your domain to point it to your hosting name servers. Just simple as that. And go to your hosting cPanel and install your WordPress. As simple as that. If you still get any doubt, you can just comment in the comment section for your doubts. We will have a Q&A on our Instagram. If you find any doubt, you can simply contact on my email or my WhatsApp for your doubts. I am always available. It is taking a bit time to install our WordPress. Might be the Wi-Fi is slow, the net connection is slow, or the uh, WordPress is heavy. And congrats, your site is ready. Go to dashboard again. Check the dashboard URL, himachaltravelers.com, WP admin. Same dashboard we have seen in our Namecheap hosting. बस थोड़ा सा फर्क है. Namecheap hosting is shared hosting, which is a bit slow, and SiteGround is our premium hosting, which is very fast for a small business or a medium business. So you can simply delete the installation on your Namecheap hosting. Let me show you how to delete it. If you are finding any difficulty to install or to remove, you can check how to remove the domain from your hosting. Let me show you how to remove the domain from your hosting. Simply go to domains in domain category. Okay. And where is Himachal Traveler? Here is Himachal Travelers. Manage. Remove domain. Remove this domain. It can take a moment to delete a domain. Simply how we remove a domain from a hosting. Okay. Plus another thing, the system has removed Himachal Traveler domain from your hosting. Plus, you have to remove the WordPress installation too, to not get trouble in the future. You can see WordPress is also installed here. Just remove the installation. Remove installation. Okay, done. Faster than ever. Make sure to remove both the domain and the WordPress installation to not get issues in the future. And here's how we connect a domain to a hosting. So if you find it useful,
Make sure to subscribe our channel and like our video for more videos on WordPress. Thank you.